Hello everyone, today we will discuss first thinker of sociology, our first thinker, and the name of the thinker is Karl Marx. And basically we need to focus only on six thinker in sociology. The first is Karl Marx, the second is Weber, the third is Durkheim, the fourth is Talcott Parson, and the fifth one is R.K. Merton, and the last one is G.H. Mead. इनके अलावा हमें सोशियोलॉजी में किसी और थिंकर के बारे में नहीं पढ़ना है. So today we will discuss the concept given by Karl Marx and his contribution in the field of sociology. तो Karl Marx, there are four contribution given by Karl Marx in the field of sociology जो basically हमें UPSC में पढ़ना है. The first one is historical materialism. The second one is class struggle. The third one is mode of production, and the fifth one is alienation. So these are the four things given by Karl Marx, that is historical materialism, class struggle, mode of production, and then alienation. We need to focus only on these four concepts. Today we will discuss only the first one, the historical materialism, which is very important. And once you will study historical materialism, then your class struggle and mode of production will be over. Okay, so we will study in such a manner कि हम ऐसे historical materialism को पढ़ते हैं कि class struggle और mode of production इसी में cover हो जाएगा. But still we will discuss class struggle and mode of production in detail in separate lecture. Today we will discuss only one thing, that is historical materialism. Now this is historical materialism and the concept is given by Karl Marx. तो before going to start the concept of historical materialism, इनके बारे में एक ही चीज जान जाओ, दो चीज. पहला चीज, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं. Conflict perspective, and the second thing is economic. मेन क्राइटेरिया. तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का जिक्र होगा. एक होता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का जिक्र होगा, देन वी नीड टू डिस्कस ऑन कार्ल मार्क्स. और इकोनॉमिक इज द मेन क्राइटेरिया. इनका कोई भी थ्योरी हो, जैसे मॉड ऑफ स्ट्रगल हो, क्लास स्ट्रगल हो, मॉड ऑफ प्रोडक्शन हो, क्लास स्ट्रगल हो, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म हो, एलिनिएशन हो, सब चीज इकोनॉमी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. एंड दिस वन इज द फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, और एंड ईच एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग ओनली अराउंड इकोनॉमी. और जहां तक ये सही भी है, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग ओनली अराउंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया. लोग बोल देते हैं नहीं, पॉलिटी भी मैटर करता है, सोसाइटी भी मैटर करता है, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज मैटर करते हैं, बट स्टिल व्हाट इज happening in reality, each and everything is in present time is mainly determined by economic. अब पढ़ने आ रहे हो, definitely you want to do something for your country. If you want to qualify UPSC, definitely you want to do something for your country, for poor people. But still, what is the major theme behind qualifying UPSC? पहला चीज stability. किस चीज का? Economic stability. सैलरी फिक्स आएगा, जब मनी करेगा 400, 500, 1000, 10,000 करोड़ करप्शन में ले लेंगे कहीं ना कहीं से. सो इकोनॉमिक इज द मेजर क्राइटेरिया. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म. तो जहां तक कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को एक फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए. इन अर्लियर सेशन ऑल्सो आई हैड डिस्कस कि फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक यू नीड टू डेवलप सम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, मीन्स व्हाट वी हैड टू स्टडी in a chronological manner in that topic, that is structural format. तो historical materialism है, तो इसमें हम पहले चीज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि what should be the introduction of historical materialism. Intro. Okay, and in introduction we need to define the term itself. That should be your introduction, and that should be the finest introduction. So what is historical materialism? What is historical materialism? Simple definition है, economic interpretation of human history, mainly European society, is known as historical materialism. Economic interpretation. Economic interpretation of human history और मेनली यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि ये यूरोप से बिलोंग करते थे और यूरोप की सोसाइटी को पढ़ते थे, तो
तो मेनली इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी इज नोन एज हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। मीन्स वी वांट टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि किस सोसाइटी में, मतलब ह्यूमन सोसाइटी कितने स्टेजेस में इवॉल्व हुए हैं, एंड सेकंड थिंग what are the various classes that emerges in that society. So economic interpretation of human history or European society is known as historical materialism. Economic interpretation means we will discuss each and every concept in every stages of society in relation to economy. That is known as historical materialism. History को पढ़ते हैं materialism के through, means economic के through. So economic interpretation of human history or European society is known as historical materialism, and he applied this concept. He applied the concept of historical materialism and evolved human stages or history of human stages in 5 phases or 5 stages. Human society, 5 stages. ठीक, historical materialism, economic interpretation of human history or European society is known as historical materialism, and he applied that concept to know the stages of human society or human history. तो उन्होंने बोला था there are 5 stages and we need to focus on these 5 stages. तो अगर आप ये 5 stages पढ़ लेते हो then historical materialism will be over. But in the same manner, mode of production and class struggle will be over. But we will discuss class struggle and mode of production in separate lecture. In this, we need to focus only on historical materialism. Now, what should be the first stage given by Karl Marx in historical materialism? The first stage is primitive communism. कम्युनिज्म का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वालिटी. ओके, कम्युनिज्म का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वालिटी. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज? इस स्टेज में ये हुआ कि मेंस आर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, मेनली ट्राइबल पीपल्स. मेंस आर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स. ह्यूमन बीइंग्स आर फूड गैदरर एंड हंटर्स. मैंस आर फूड गैदरर्स एंड हंटर. तो इसमें जितना प्रोडक्शन होता था उतना ही कंजप्शन होता था. सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन. नो सरप्लस प्रोडक्शन. ओके, सो if there is no surplus production, then there will be no concept of private property and there is no conflict in the society. तो सोसाइटी क्या था? इग्लिटेरियन सोसाइटी था. egalitarian society. Okay, so human beings are food gatherers and hunters and then there is no surplus production, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता था उतना कंजप्शन होता था इस सोसाइटी में, and that is the reason this society is known as egalitarian society. कोई क्लास डिवीजन इस सोसाइटी में नहीं था प्रिमिटिव कम्युनिज्म में. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ओके, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज, सिस्टम ऑफ इक्वालिटी. ओके, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म डेफिनेशन इज ओवर एंड नाउ व्हाट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म? उसमें दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड स्टेज, दैट इज नोन एज एंशिएंट सोसाइटी. इसी को स्लेव सोसाइटी बोलते हैं. Ancient society means what we call ancient society as a slave society. Okay, now what was happening in this stage? In this stage, first time there is production of surplus. Okay, पहली बार इस स्टेज में ऐसा हुआ कि ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस सरप्लस. देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन. सरप्लस प्रोडक्शन इन सोसाइटी. पहली बार ऐसा हुआ कि सोसाइटी में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. ठीक, अब एक एग्जांपल आपको बताया जाता है. सेट फॉर एग्जांपल, अगर एक रिक्शा वाला है और उसके 4 बेटे हों. ठीक, उसने अपनी जिंदगी में जितना कमाया उतना खाया.
बच्चों में झगड़ा नहीं होता है, क्यों? इक्वालिटी है, क्योंकि कुछ सरप्लस उसने किया ही नहीं जिसकी वजह से झगड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर हैं और आप लोग 4 भाई हो और आपके फादर ने बहुत सारा, कम से कम 200-300 करोड़ प्रॉपर्टी इकट्ठा की हो, देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर्स, क्योंकि कौन उस चीज को ओन करेगा कि ये मेरा है प्रॉपर्टी, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक? सेम थिंग हैपनिंग इन द एंशिएंट सोसाइटी. There is surplus production in the society. When there is surplus production, so there is fight between two communities. Okay? तो एक emerges होता है as a winner, एक होता है loser. ठीक? Winners को बोलते हैं haves and इसको बोलते हैं have nots. Okay? तो surplus production हुआ, there is कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, एक हो गया हैव्स और एक हो गया हैव नॉट्स. सो दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ 2 क्लासेस इन द सोसाइटी. 2 क्लासेस, दैट इज मास्टर्स एंड स्लेव्स. This is important. So what was happening in the primitive communism stage? There is no division in the society, there is no class in the society, equalitarian society. Why? Because there is no surplus production. What was happening in ancient society, means slave society? There is development of surplus production and there is fight between the community की who will own that surplus production. Fight हुआ, एक winner दूसरा loser, haves and have nots, and that led to the emergence of 2 classes. The first one is master and the second one is slave. ठीक? This is ancient society. Always remember one thing, those who own the means of production, okay, they are always in minority, and those who own the means of production, they are in the category of slaves. They are always in majority. कहते हैं ना कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम रूल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि there is a concept called minority will rule this entire world. Best example Israel, best example Sikh community. Minority rule करता है, majority will become a labor class or slave class. इसी थ्योरी से प्रूव होता है. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाओगे then you will rule this world. No, minority will rule this world. Same thing, अभी आप देख लो, अभी एक सर्वे आया है कि अप्रॉक्स 500 people own 40% capital of India. Only 500 people, 40% property of India they own. समझ रहे हो ना? दे आर इन माइनॉरिटी, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, दे कैन डू एनीथिंग. जो मेजॉरिटी में वो स्लेव हैं, वो लेबर हैं, उससे अधिक वो उठ ही नहीं पाए. सो दिस इज द एंशिएंट सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, जिसमें 2 क्लासेस डिवीजन हुआ, मास्टर एंड स्लेव्स. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लेव्स रिवोल्टेड एंड अ न्यू सोसाइटी इमर्जेस. ओके, with the passage of time, slaves revolted and a new society emerges, and that new society is known as third stage, feudal society. Feudal society. In ancient society, slaves were the means of production, but in this society, slaves were become irrelevant, and the major means of productions were land and animals. Means of production, land and animals, and slaves become irrelevant. Okay, this is important. Slaves become irrelevant, lands and animals become the means of production. And in this society, 2 classes emerges. Same thing like in ancient society, master and slaves थे, इसमें भी 2 classes emerge हुआ. 2 classes in this society also. First is the lords, and जो second category है वो क्या है? serfs. The lords and the serfs. ठीक. इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या? सिस्टम ऑफ इक्वालिटी, देयर इज नो क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी. ओके, एंड इन एंशिएंट सोसाइटी 2 क्लासेस इमर्जेस, मास्टर एंड स्लेव्स. स्लेव्स वर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट वाज हैपनिंग इन द फ्यूडल सोसाइटी? 2 क्लासेस इमर्जेस. द फर्स्ट वन इज लॉर्ड लाइक मास्टर एंड द सर्फ लाइक स्लेव्स, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस वेयर चेंजेस फ्रॉम स्लेव टू लैंड एंड एनिमल्स. ठीक. तो
तीन स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं. द फर्स्ट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, द सेकंड इज एंशियंट एंड द थर्ड वन इज फ्यूडल सोसाइटी इन विच टू क्लासेस इमर्जेस. इन्हीं दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है. हर स्टेज में टू क्लासेस इमर्जेस एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस. उसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल. मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस होते आ रहे हैं, ठीक ना. तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में ऐसे ही पढ़ना है. प्रिमिटिव पढ़ा, एंशियंट पढ़ा, फ्यूडल पढ़ा एंड देन नाउ द फोर्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. फोर्थ स्टेज कैपिटलिस्ट. Capitalist society, the fourth society, which is also very important. And in this society, agriculture was replaced by factory system as a new mode of production. Agriculture was replaced by factory system as a new mode of production. एग्रीकल्चर वॉज रिप्लेस्ड बाई फैक्ट्री सिस्टम. अब इसमें क्या होता था? रिलेशन, कैश नेक्सस. कैश नेक्सस, जितना आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा. कैपिटलिस्ट सोसाइटी का यही है ना. दिल्ली बॉम्बे लोग क्यों आते हैं वहां से, अपने विलेज एरिया से दिल्ली बॉम्बे बेंगलुरु क्यों आते हैं लोग? कैपिटलिस्ट सोसाइटी. जस्ट रिलेशन इज बेस्ड ऑन कैश नेक्सस. जितना पैसा दोगे उतना काम होगा, सिंपल. और इसीलिए पैसे भी ज्यादा आते हैं. सो एग्रीकल्चर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय फैक्ट्री सिस्टम एंड रिलेशन इज जस्ट लाइक कैश नेक्सस. एंड इन दिस फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन इज डन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Profit maximization. Now what was happening in this society? There are two classes which emerges in this society also. Primitive communism में कोई क्लास नहीं था. Ancient में दो थे, master and slaves. Feudal में lords and serfs थे. Now what was happening in the capitalist society? Two classes emerges. The first one is proletariat, and the first one is proletariat, and the second one is bourgeois. Bourgeois and proletariat. Simply, bourgeois are the owning class, they are the non-owning classes like master and slaves. ठीक, तो नाम चेंजेस हो रहे हैं. हर एक सोसाइटी जब ऐसे चेंज हो रही है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, तो दो ही क्लासेस इमर्ज हो रहे हैं. एक हैव्स एंड एक हैव नॉट्स. एक ओनिंग क्लास है, एक नॉन ओनिंग क्लास है. एक ओनरशिप क्लास है, एक नॉन ओनरशिप क्लास है. उनके नाम अलग अलग हैं. मास्टर, स्लेव. ओके, lords, serf, bourgeois and proletariat. ठीक. So in capitalist society agriculture was changed and factory emerges as a new mode of production. Relation is just like cash nexus, and then this is the first time where we are just focusing only on the profit maximization, and because of all these things two classes emerges. The first is bourgeois, the owning class, and the proletariat. They are the suffering classes, they are the working classes. So these are the four stages of historical materialism given by Karl Marx. The last stage which is very important, and that last stage is known as communism. Okay, and this stage passes from two stages. This stage passes from two stages. Now the first one is socialism and the second is communism. ठीक, सोशलिज्म क्या होता है? This is known as the dictatorship. This is known as the dictatorship of proletariat or absence of private property. सोशलिज्म एक ऐसा स्टेज है जिसे बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ private property. Each and everything is owned by the government. So there is a system of equality in the society. This is called socialism. Absence of private property and each and everything. Absence of private property and each and everything is owned by the government. In this we can also write that this is the stage of dictatorship of proletariat. Dictatorship of
डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो अभी आपको ये टर्म सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या है, ऐसे ये टेक्नोलॉजीज, ये टर्म, बट वी नीड टू राइट सच टाइप ऑफ टर्म्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में एक ही चीज है, आसान तो बहुत है, but we need to write some sociological language in our answer to fetch good marks. So this is the stage of dictatorship of proletariat, means they are the working non ownership class और उनका dictatorship आ जाएगा like in China, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अभी रूल कर रही है। So this is socialism, absence of private property and everything is owned by government. Now socialism जो last stage है communism passes through two stages, socialism and the last में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म। in this stage इसको ऐसे लिखेंगे, there is no conflict between relations of production, no conflict in the society and equalitarian society exist. No conflict in relations of production and equalitarian society exist. So in historical materialism, first we will focus on what is historical materialism, economic interpretation of human history or European society, and then applying historical materialism, Karl Marx gave 5 stages of human history. The first is primitive communism, means system of equality, there is no surplus production. The second is ancient society, first time surplus production emerges, there is conflict in the society, the one is haves, the second is have nots, society divided into 2 classes, the first is master and the second is slaves. Now what was in the third stage, that is known as feudal society. Feudal society mein lords and serf emerges as a two classes, or slaves become irrelevant and new mode of production emerges like land and animals. Now what was happening in the capitalist society, agriculture system ही change हो गया, capitalist system आ गया, उसमें relation क्या होता था, cash nexus पे होता था, okay, and first time we are just focusing only on the profit maximization, and that is the reason why we called capitalist society as exploitative system, exploitative society. And the last stage is communism, system equality, जो 2 stages में पास हुआ है. The first is socialism, means absence of private property and dictatorship of proletariat, and the second is communism, जिसको हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेज, no conflict in relations of production, there is no conflict in the society, equalitarian society. So this is the concept given by Karl Marx as a historical materialism. लास्ट में हम कंक्लूजन लिखने से पहले क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिसिज्म, द फर्स्ट इज नो टाइम पीरियड. नाउ क्रिटिक लोग ये बोलते हैं कि आपने स्टेजेस तो बता दिया, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड फॉर दैट स्टेजेस. कौन बताएगा कि टाइम पीरियड क्या है? ऐसे ही कुछ भी आया कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं होगा. You should give the exact time period for that different stages. और अभी तक कम्युनिज्म exact as it is कहीं तो आया ही नहीं है. So what should be the time period? This one is the first criticism. Now what should be the second given by Weber? Weber क्या बोलते हैं? He said that in every society there are 2 classes, but in industrial society there is also a third class that is known as middle class. मिडिल क्लास के बारे में इन्होंने तो कभी बात ही नहीं किया. अब इंडिया में क्या होता है, किसी से भी आप पूछोगे तो ही सेड दैट आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास. अब आप एक्टर से भी पूछो जिसके पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, वो भी बोलेगा आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड. नॉर्मल इंसान से भी पूछो मिडिल क्लास बैकग्राउंड. तो वेबर बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स नेवर टॉक्स अबाउट मिडिल क्लास. सो दिस शुड बी द सेकंड इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म गिवन बाय वेबर. नाउ व्हाट शुड बी द थर्ड, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी. अब हमेशा एक चीज याद रखना, ये हमेशा प्रोडक्शन
और कंजप्शन, और उसी के थ्रू ये सोसाइटी का क्लास स्ट्रगल और स्ट्रक्चर बताते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमी। व्हाट कार्ल मार्क्स सेड दैट कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है, क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन द सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय economy. But recent thinkers said that कि in society each and everything is not only determined by economy, because society is a very complex thing and there are something called polity, culture, etc. They also determine the structure and classes in the society. For example, political revolution हुआ, अरब स्प्रिंग, पूरा सोसाइटी चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ और अरब स्प्रिंग में सोसाइटी चेंज हुआ। तो इकोनॉमी का वहां तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, दैट इज पॉलिटिकल रिवोल्यूशन जिसने सोसाइटी को चेंज कर दिया। तो ही इज जस्ट टॉकिंग ओनली अबाउट इकोनॉमी 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 एंड फॉरगेटिंग ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी लाइक पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड मेनी मोर थिंग्स। Okay, so these are the three criticism given by the first is Weber and other two thinkers. So these are the three criticisms of historical materialism. तो historical materialism इंट्रोडक्शन ओवर हो गया, स्टेजेस ओवर हो गए, क्रिटिसिज्म ओवर हो गया, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे एक लाइन में जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन इसमें लिखेंगे मैटर डिटरमाइन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री and that is the reason this theory is known as historical materialism. Matter determine course of history. Matter determines the course of history and that is the reason this theory is known as historical materialism theory. So this is all about the concept related to historical materialism given by Karl Marx. इसी में क्लास स्ट्रगल और मोड ऑफ प्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया है, जो आपको समझ में नहीं आया होगा। We will discuss in next lecture what is class struggle, what is mode of production, and then alienation or alienation. So this one is the first contribution of Karl Marx in sociology. In next lecture we will discuss second concept and later on we will discuss various topics of sociology. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you so much.